तो बच्चों, टुडे नाउ डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 left questions. I have discussed in question exercise 3.3 question number 1. In a question number 1 total 6 questions, so I have already discussed. So today now discuss exercise 3.3 next questions. Question number 2. Here is question number 2. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24, and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. So here is you want to find the value of m. So first of all, from equation 1 and equation 2, find the value of x and y. After finding the value x and y, put value on a place of x and y. After solving, we get value of m. So इसको solve करते हैं. Here is equation first, 2x plus 3y equal to 11, and here is second equation, 2x minus 4y equal to minus 24. From equation 1, 2x plus 3y equal to 11. Then x equal to 11 minus 3y by 2. Now put the value of x in equation 2. इसको substitution method से solve कर रहे हैं. Putting the value of x in equation 2. Here is equation 2, 2x minus 4y equal to minus 24. Now 2 into on a place of x, 11 minus 3y by 2 minus 4y equal to minus 24. Now 2 cancel हो जाएगा. 11 minus 3y minus 4y equal to minus 24. Now solve this. Here is minus 3y, here is minus 4y. Minus 3y minus 4y minus 7y equal to minus 24, and here is 11 is plus 11. So equal to कई साइड आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा. So here is minus 11. Here is minus 7y and minus 24 and minus 11, minus 35, minus minus cancel हो गया. Here 7y equal to 35. 7 से 35 कैंसिल करेंगे. 7 5 जा 35. y equal to 5. Now we have to find the value of x. Put the value of y in equation थर्ड. इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे. सो यहाँ से मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा. सो हेयर इज इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2. पुट ऑन ए प्लेस ऑफ y 5. तो 11 माइनस 3 5 या 15 बाई 2. 11 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4 बाई 2. माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा माइनस 4. x इक्वल टू माइनस 2. सो हेयर वी फाइंड value of x equal to minus 2 and value of y equal to 5. Now put value of y and value of x in this equation and find the value of m. Here is y equal to 5 and x equal to minus 2. Now here is equation y equal to mx plus 3. Now put on a place of y equal to 5 and m and a place of x equal to minus 2 plus 3. Now 5 ये इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एंड माइनस 2 किसमें हो जाएगा डिवाइड में. तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 एंड डिवाइड माइनस 2. 2 कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ क्या बचा माइनस 1. सो m इक्वल टू माइनस 1 इज योर आंसर. यही हमारा आंसर हुआ. नेक्स्ट, इन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड टोटल 6 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन. सो सॉल्व 1 by 1 from the pair of linear equation for the following problem and find their solution by substitution method. Here is given, find the problem, find the solution by substitution method. So take first questions. The difference between the two number is 26. Here is difference of two numbers. That means one number is greater and one number is smaller. So let the greater number be x and a smaller number be y. And here is difference of two number. Difference means minus. The x minus y equal to 26, and one number is 3 times the other number.
here is greater number, here is a smaller number. Here you know, here is say that in a questions one number is 3 times the other number. तो ये मेरा x greater number है and y क्या है, smaller number है. तो x जो greater होगा 3 times, so here is we apply equal to sign, so multiply 3 in a smaller number, because here we balance the equation, so multiply 3 in equation 3 multiply in a smaller number. So equation second is x equal to 3y. Now solve equation first and second. Equation first x minus y equal to 26 and equation second x equal to 3y. By substitution method, questions में already given था, तो substitution method से solve करना है. So putting the value of x in equation 1. Putting the value of x in equation 1. So here is equation 1, x minus y equal to 26 and here is given x equal to 3y. So now put on a place of x 3y minus y equal to 26. 3y minus y equal to 2y equal to 26. 26 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 13 जा 26. So here y equal to 13. Now put y equal to 13 in equation 2, then you obtain value of x. Here is equation second, x equal to 3y. Now x equal to 3 and y equal to 13. So here put y equal to 13. 3 into 13, 13 3 ja 39. So the number are 13 and 30. Next question number 2. The larger of two supplementary angles. We know that sum of two angle equal to 180 degree in a supplementary angle. An angle is known as supplementary if sum of two angle is 180 degree. So the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree, and here say that exceed the smaller by 18 degree. A smaller angle से 18 degree greater है, that means difference of larger and a smaller equal to 18 degree. So here we obtain two angle, one sum of supplementary angle 180 degree, one larger and one smaller. So here is two angle, larger angle x and a smaller angle y. And we know that in a supplementary angle sum of two angle equal to 180 degree. So x plus y equal to 180 degree. And a second equation, larger angle exceed a smaller by 18 degree. Larger angle जो है smaller से 18 degree greater है. So difference कितना हो जाएगा 18 का. So x minus y equal to 18. So this is equation first, this is equation second. Now solve equation first and second by substitution method. X minus y equal to 18 and x plus y equal to 18. From equation 1, x minus y equal to 18, then x equal to 18 plus y. ये minus में साइड आएगा तो क्या हो जाएगा y में. Putting the value of x in equation 2, x का value equation 2 में put करेंगे. Equation 2 is x plus y equal to 18 and put on a place of x 18 plus y equal to 180 degree. So here 18 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, एंड y प्लस वाई इक्वल टू 2y. नाउ 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 इक्वल टू 160. नाउ y इक्वल टू 160 बाई 2. 160 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 60, 2 1 जा 2. सो y इक्वल टू 18 डिग्री. नाउ पुट y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन थर्ड. दिस लेट दिस इक्वेशन इज ए थर्ड इक्वेशन. इसको थर्ड मैंने मान लिया, ये मेरा इक्वेशन थर्ड है. नाउ पुट y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड इज x इक्वल टू 18 प्लस y. नाउ x इक्वल टू y के प्लेस पे 18 एंड प्लस y के प्लेस पे 81. 18 प्लस 81 इक्वल टू 99. Hence the two angle are 81 and 99. This is your answer. Next question number third. The coach of cricket team buys 7 ball and 6 balls. Buys 7 bats and 6 ball for Rs 3,800. Later she buy 3 bats and 5 balls
for RS 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. So तो first of all let करेंगे cost of each bat X and cost of each ball Y. Let the cost of a bat X and cost of a ball Y. And here is 7 bat, then 7x 6 ball plus 6y equal to 3800. Now here is from equation 2 3 bat, that means 3x, 5 balls, that means 5y equal to 1750 rupees. So this is equation first, this is equation second. Now solve this first and second equation by substitution methods. Here is equation first, 7x plus 6y equal to 3800, and second equation 3x plus 5y equal to 1750 rupees. From equation 1, 7x plus 6y equal to 3800. Now solve, find the value of x, then 6y इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3800 माइनस 6y एंड 7 का हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इस x को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. तो हियर इज इक्वेशन 2, 3x plus 5 equal to 1750 rupees. Now put on a place of x value of x. Here is 3 and x equal to मैंने फाइंड किया है 3800 minus 6y by 7 plus 5y equal to 1750 rupees. Now multiply 3 into 3800 equal to, we obtained 11400 minus 3 into 6 18y divide 7 plus 5y equal to 1750. Now solve this. Here is LCM of 7 and 1 equal to 7. Now 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा. Now 1 into 11400 equal to 11400 minus 18y plus 7 into 5 35y equal to 1750. Now 11400 and here is 35y and minus 18y and यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 7 into 1750. So here 35y minus 18y equal to 17y and 1750 into 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा 12,250 रुपीज एंड 11,400 माइनस में प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. नाउ 12,250 रुपीज माइनस 11,400 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 850 रुपीज एंड हेयर वी फाइंड टू वाई, देन 70 क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा. तो 850 रुपीज में 17 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50. देन हेयर वी ऑब्टेन y इक्वल टू 50. नाउ पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन थर्ड. दिस इज इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड ये हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा. नाउ here put value of y, so we obtain value of x. ये मेरा इक्वेशन थर्ड था. दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड पुट वैल्यू ऑफ y मैंने यहाँ 50 फाइंड किया है. सो 3800 minus 6 into 50 by 7. तो 3800 6 into 50 क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा by 7. तो 3800 minus 300 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3500 आ जाएगा by 7. कैंसिल करेंगे तो 7 5 जा 35 and 2 0. So here x equal to 500. Y equal to 50, x equal to 500. This is your answer. Next,
क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी चार्ज in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Here are two types of charge, fixed charge and charge per kilometer. So let fixed charge x and charge per kilometer y. So here say that for a distance of 10 kilometer, the charge paid of Rs 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid Rs 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? And how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? Now solve. First of all, take fixed charge x and charge per kilometer y. So here is for 10 km, fixed charge x and charge per kilometer y. So 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10y इक्वल टू 105. एंड सेकेंड इक्वेशन, फिक्स चार्ज x एंड फॉर 15 किलोमीटर चार्ज क्या हो जाएगा, 15y इक्वल टू 155. नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड्स. x प्लस 10y इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155. Now solve equation 1 and 2. From equation 1, x plus 10y equal to 105, then x equal to 105 minus 10y. Putting the value of x in equation 2. Here is equation 2, x plus 15y equal to 155. Now put on a place of x 105 minus 10y. 105 minus 10y plus 15y equal to 155. Now 15y minus 10y equal to 5y equal to 155, and here is 105 in a plus equal to कई साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 105. देन 155 minus 105 equal to 15, and we have to find y, then 5 in the divide. So 50 by 5, then 5 10 ja 50, y equal to 10. Now put value of y in equation third. Put value of y in equation third. So here is third equation, x equal to 105 minus 10y. X equal to 105 minus 10, and here we obtained value of y equal to 10. So 105 minus 10 into 10, 100 हो जाएगा. So 105 minus 100 equal to 5. So fixed charge x मैंने लेट किया था, तो फिक्स चार्ज हो जाएगा Rs5 एंड चार्ज पर किलोमीटर 10. नाउ सेकेंड क्वेश्चन था इसमें कि चार्ज फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस. सो x इज फिक्स चार्ज एंड फॉर 25 किलोमीटर 25y. तो x का वैल्यू मैंने फाइंड किया था 5 प्लस 25 एंड चार्ज पर किलोमीटर मेरा आंसर आया था 10. So 5 plus 25 into 10, 250. Now 5 plus 250 equal to 255. So fixed charge x equal to 5 and charge per kilometer y equal to 10 rupees and charge per kilometer equal to 255 rupees. This is your answer. Next question, question number 5. A fraction become 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. Fraction is in the form of x by y, and here say that a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. So first of all लेंगे numerator x and denominator y. Let the numerator x and denominator y, and here say that if 2 added the both numerator and denominator, so here is a x by y is a fraction, and added to both numerator and denominator you get 9 by 11. So here apply cross multiplication, 11 into x plus y equal to 9 into y plus 2. Now solve. 11 into x, 11x plus 11 into 2, 22 equal to 9 into y, 9y plus 9 into 2, 18. Now solve. 11x, here is a 9y, इस साइड आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा, एंड here is 18 एंड ए प्लस में है इक्वल टू किस तरह आएगा तो
माइनस में हो जाएगा. नाउ 11x minus 9y equal to 18 minus 22 equal to minus 4. This is equation first. And here is equation second. If 3 is added to both the numerator and denominator. So here is added numerator and denominator 3. Then we obtained 5 by 6. Now apply cross multiplication. 6 into x 6x, 6 into 3 18, 5 into y 5y plus 5 into 3 15. Now 6x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू 15. हेयर एज 18 प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा. तो 6x minus 5y equal to 15 minus 18 equal to minus 3. Now solve equation 1 and 2 by substitution method. Then find the value of x and y. Here is equation first and this is equation second. From equation 1, 11x minus 9y equal to minus 4. Then x equal to minus 4 plus 11 plus 9y by 11. Putting the value of x in equation 1. x का value equation 1 में put करते हैं. तो here is equation 1. Here is equation 2. 6x minus 5y equal to minus 3. So 6 and on a place of x put minus 4 plus 9y by 11 minus 15y equal to minus 3. Now solve 4 into 6 minus 24 plus 9y into 6 54y divide 11 minus 5y equal to minus 3. Now take LCM 11 and 1 का LCM 11 हो जाएगा. Now 11 में 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में जाएगा. सो हेयर माइनस 24 प्लस 54y माइनस 11 इंटू 5 55y डिवाइडेड 11 इक्वल टू माइनस 3. सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24y माइनस 55y इक्वल टू माइनस y एंड माइनस 24 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 11 माइनस 33 एंड माइनस y इक्वल टू माइनस 33 एंड यहाँ पर माइनस 24 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 24. सो माइनस y इक्वल टू 24 एंड माइनस 33 इक्वल टू माइनस 9. सो हेयर इज ए माइनस y एंड हेयर इज माइनस 9. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 9. नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड है, इसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे, देन मेरा x का वैल्यू आ जाएगा. नाउ पुट करते हैं इसमें. Here is y equal to 9. Now put in equation third. ये मेरा इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन थर्ड इसमें पुट करेंगे. हाँ, x equal to minus 4 plus 9 and here we find y equal to 9 divided 11. So minus 4 plus 9 into 9 81 divided 11. Minus 4 plus 9 into 9 81 divided 11. Here is 81 minus 4 equal to 77 divided 11. 11 7 ja 77. X equal to 7. Hence the fraction is x by y. Here is x 7 and y 9. This is your answer. Last question of this exercise 3.2, question number 6. Total 6 questions. This is last question. 5 years hence. Hence means before. 5 year hence. नहीं, 5 year hence. That means after. If you are 10 year, then after 5 years, 10 plus 5. So here is 5 year hence. The age of Jacob will be 3 times that of his son. Here are 2 persons, Jacob and his son. तो लेट करेंगे, लेट present age of Jacob x and present age of his son y. And second equation, 5 years ago. Ago means before. 5 years ago, Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? That present age of Jacob x and present age of son y. And from first equation, 5 year hence, that means age of Jacob x plus 5 and age of his son y plus 5.
5 year hence, that means after. So here is say that there will be three times that of his son. ये जो है जैकब जो है 3 टाइम्स हो जाता है अपने सन का, बट हेयर वी अप्लाई इक्वल टू साइन, सो मल्टीप्लाई 3 इन एज ऑफ जैकब सन. So solve x plus 5 equal to 3 into y, 3y plus 3 into 5, 15. Now x, a 3y प्लस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 15, एंड ए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस. So x minus 3y equal to 15 minus 5 equal to 10. This is equation first. Now from second statement, 5 years ago means before. 5 years ago Jacob age x minus 5 and his son y minus 5, and here he say that 7 times that of his son. ये जो Jacob जो है 5 years ago जो है 7 टाइम है अपने son का. So here is we will apply equal to sign, then multiply 7 in his son age. So solve this. X minus 5 equal to 7y minus 7 into 5, 35. X 7y इस साइड आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 35, एंड हेयर इज ए माइनस, इक्वल टू कई साइड आएगा तो दिस इज ए प्लस 5. नाउ सॉल्व x minus 7y equal to minus 35 plus 5 equal to minus 30. This is equation first, this is equation second. Now solve equation first and second by substitution methods. So by equation 1, x minus 3y equal to 10, then x equal to 10 plus 3y. Now put the value of x in equation 2. Putting the value of x in equation 2. Here is equation 2, x minus 3y equal to minus 30. Now on a place of x put 10 plus 3y minus 7y equal to minus 30. Now here is plus 3y minus 7y equal to minus 4y equal to minus 30, and here is a plus 10, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10. तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 30 एंड माइनस 10 माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 40/4 दैट मीन्स 4 10 जा 40, y इक्वल टू 10. नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, देन वी अपडेट वैल्यू ऑफ x. here is equation third, x plus 10y, x equal to 10 plus 3y. Now x equal to 10 plus 3, and on a place of y put 10 plus 3 into 10 30, x plus 10 plus 30 equal to 40. The x is a present age of Jacob and y is a present age of Jacobson. So present age of Jacob 40 year and present age of Jacobson 10 year. So exercise 3.3 complete हुआ. If you have any doubt, then tell me in comment box or WhatsApp group. Okay, thank you.